देखिए, ये जो अमरीकी राजदूत हैं भारत में, ये जब से आए हैं, ये अपने तय तो कोशिश कर रहे हैं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो वापस उसी गर्मजोशी की तरफ जाएं जैसे पहले थे। अब वो कितना संभव होगा नहीं होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन जो कश्मीर का उनका दौरा है वो दो तीन लिहाज से मेरे ख्याल भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आया है। एक तो ये कि उन्होंने ये स्वीकार किया है, उनके स्वीकार करने या ना करने से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमरीकी राजदूत आकर के ये स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। एक ज़माना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था। तब भी इस जो वास्तविकता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं, वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं, तो मेरे ख़्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ ये कि जब वो ये कहते हैं कि जो वो ट्रैवल एडवाइज़री इश्यू करते हैं अपने लोगों को, अ, वो वो अभी तक तो ये रही है कि यहाँ पर बहुत खतरा है तो इसलिए आप यहाँ पर सफ़र ना करें। लेकिन ये भी एक नई वास्तविकता जो है कश्मीर की कि वहाँ पर पर्यटक जो हैं वो बड़े आज़ादी से घूम सकते हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है या आतंकवाद की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया हो गई है। आतंकवाद लगभग कमर उसकी तोड़ दी गई है। तो उस वास्तविकता को भी अब वो पहचान रहे हैं और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम ये पेशकश करेंगे कि वो ट्रैवल एडवाइजरी को अमेंड किया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सके, जो कश्मीर के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटक आते हैं, खास तौर पर विदेशी पर्यटक, क्योंकि देसी पर्यटक तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर विदेशी आते हैं तो जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था है उसको और बल मिलता है, उसमें और तरक्की होने की गुंजाइश रहती है। तो मेरे ख्याल ये तो दो बड़ी अच्छी चीज़ें हुई और तीसरी चीज़ मेरे ख्याल जो हमारे को माननी चाहिए वो ये है कि जो उनकी मुलाकात हुई कश्मीर के मुख्यमंत्री जी के साथ, वो भी एक काफ़ी अच्छी मुलाकात रही और ख़ास तौर पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से क्यों मिले। ये मेरे ख्याल एक बहुत साधारण सी बात है। कोई भी राजदूत जब किसी प्रदेश में जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलता है, तो अगर उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ये कहा कि श्रीनगर और दिल्ली के बीच के जो रिश्ते हैं वो दिल्ली में तय होंगे, डीसी में नहीं। यानी कि वॉशिंगटन में नहीं होंगे, वो दिल्ली में तय होंगे और उसके लिए जिस तरीके की राजनीतिक पहल करने की ज़रूरत है या जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधि की ज़रूरत है, वो भारत के अंदर डिसाइड होगी, वो भारत के बाहर डिसाइड नहीं होगी। तो मेरे ख्याल इसका भी स्वागत करना चाहिए। कुल मिलाकर के अभी तक जो उनका दौरा रहा है, वो भारत के लिए अच्छा रहा है। Statement on the status of Jammu and Kashmir is most welcome and perhaps long overdue. I hope this is not another exercise in giving India President Trump's crumbs while the main meal is being served elsewhere. If this is definitive policy, then almost immediately the American ambassador to Pakistan should state this. We know that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Pakistan doesn't know that. If the Pakistani ambassador in Islamabad repeats it, then it will raise more confidence in India about the long-lasting implements of such a position. We hope that this will also end the rather American habit of seeing this region with cross ties because of its alliance with Pakistan. Perhaps Pakistan's most dependable ally has also seen the reality of what is happening today in Pakistan-occupied Kashmir, where the people are suffering from poverty, persecution, because Pakistan has always treated
Pakistan occupied Kashmir as a colony. The most important development in American policy under President Trump for this region is the delinking of India from the stability and security architecture of the Indian Ocean and of West Asia. This was evident when President Trump quite consciously dropped Indo from the Indo-Pacific. The American ambassador in Delhi could not adequately explain why this had happened. But we understood the implications of this shift, significant shift in American policy. President Trump has also described the recent Mecca Pact, and he did so perhaps in the last 24 or 48 hours, as a big, bold, and important first step. The question is, what is the second step? The question is, where is this pact heading? What is the third step? Is this pact heading towards the much wanted, if slightly illusory, Islamic NATO? We need clarification of that, particularly since President Trump has endorsed this pact with such warm and supportive language. This support has implications. It is a military pact. A military pact must be based on a clear definition of the enemy. Who is the enemy of the three countries who have signed the pact? Is the enemy Iran? If Pakistan puts a single soldier on the front lines of the war against Iran, Karachi will burn and the government in Islamabad will topple. Is the enemy Israel? If the enemy is Israel, then Washington will pull the rug from this pact. It is very important that America, which clearly has sponsored this alliance or endorsed this alliance, gives us the clarity that is very, very urgently required. The visit by United States Ambassador to India, Mr. Sergio Gor, to Jammu and Kashmir, Union Territory, was important at least in two ways. Firstly, he would have not visited this territory, which is somewhat controverted by some, without express permission from his State Department handlers. So that they allowed him to go is one message. Second message is what he told after meeting Chief Minister. Main component of that message was that Jammu and Kashmir is an important part of India. This is an important statement in itself, and it is not hinged to any other consideration such as Shimla Agreement, Article 370, talks with Pakistan, settlement with China, etc., etc. So the statement by itself self-stands and should be regarded as iteration of the new normal of United States policy on this issue. I would have felt even better had he said that it is integral part of India, not important part of India. But these gains or shifts are made in small driblets,
and that too would be forthcoming, I hope. Third part that you mentioned about tourism, about visits, is also important because the economy of this union territory is based on tourism. Let me recollect here that President Trump is essentially a real estate developer by profession. And he is interested in what United States can transact from a particular situation in general, and what his Trump Incorporated can gain from the situation in particular. You would recall that last year he propounded Gaza as a Riviera project, as a tourist heaven. Now, I would not rule it out that in case it is in future unveiled that Trump Incorporated or others had plans for big tourism related investments in Jammu and Kashmir. So it will have to await the advisory which restricts American citizens from visiting this area to be rescinded or amended, and other developments to take place. It's a virgin territory for international real estate developers, hotel groups, etc., etc. To India visited Kashmir, sir. Please let me ask a question, sir. Sir, he says that Kashmir is an integral part of India, and we will re-evaluate the travel advisory. Would you like to say something, sir? Hello, sir. Let me see the news we'll talk now. He told that Now there is a briefing coming. We go listen to the briefing. but on U.S. ambassador to India, sir. He commented that J&K is the important part of India. Of course, yeah, but you know that it's very good that he's saying it. But this is something which we have been insisting for a long time.